Good morning, children. In my last lecture, I told you about the great dramatist, poet, and actor William Shakespeare. I also told you about his life, his works, the times, the era during which he wrote. Today, I am going to tell you something about the major types of plays written by Shakespeare and salient features. Salient का मतलब main features of his dramas or plays. Shakespeare, as you all know, I told you earlier, he had written 37 plays in all, and these plays can broadly be divided into four major types: comedies, tragedies, romance, and historical plays. So let us today discuss about some salient features. I told you salient means main or chief features of all these four types of plays written by Shakespeare. First of all, we'll take up the comedies. Shakespeare began his dramatic career with comedies. The major comedies written by him, as I told you earlier also, but you should remember these comedies: The Comedy of Errors, Two Gentlemen of Verona, Measure for Measure, The Merchant of Venice, which is prescribed in our third year, As You Like It, which is in our first year, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream, and Much Ado About Nothing. These are his major comedies. Now, we'll discuss some salient features of his comedies. Shakespeare's comedies are mostly romantic comedies. They are all stories of love, beauty, romance, finally leading to happy marriages through sincerity, devotion, sacrifice, and steadiness. All comedies are stories of love. Then the most striking thing about Shakespearean comedy is that largely the stories, his comedies are the stories of heroines rather than heroes. All his heroines are superbly beautiful, intelligent, witty. Witty must be a new word for you. Witty means intelligent, okay? Loving and sparkling young persons. They are sincere, devoted, sacrificing, highly resourceful, and adventurous young maidens. Maidens means ladies. It is the heroines who direct and control all the developments in the plot, and it is they who finally resolve all the complications, means they solve all the problems at the end of the play. The resolution of problems comes largely through their sincerity, devotion, loyalty, and steadfastness of these heroines, as I told you. Then another salient feature is all the comedies are happily set in an atmosphere of romance, enchantment, pastoral woodland. Pastoral means Gramin, village, of the village. Old world atmosphere, music, and imaginative idealism. Some comedies like Midsummer Night's Dream have fairies, angels, etc., through which the readers or the spectators नया word है, spectators का मतलब audience, देखने वाले, दर्शक. They are taken into an imaginative world. उनको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं. कौन? ये angels और fairies. It is a world of fancy. Fancy again means kalpana, imagination, and fairy folk. They all provide a very happy escape from the grim realities of life. मतलब ये सारा ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि जो देखने वाले दर्शक हैं वो एक काल्पनिक लोक में पहुंच जाते हैं. किससे दूर? दुनिया की कठोर, हार्श रियलिटी से दूर, सब कुछ भुला के वो अपने एक
कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं जहाँ पे म्यूजिक है, इमेजिनेशन है. ओके, देन this was all about comedies written by Shakespeare. Now we come to the tragedies written by Shakespeare. आप लोगों ने कुछ tragedies के बारे में सुना होगा ना? The tragedies belong to the third phase or third stage of growth in Shakespeare's dramatic career, and the four famous tragedies that belong to this period are Othello, Hamlet, King Lear, and Macbeth. Macbeth is prescribed in the syllabus for a second year. The common characteristics or the main features of these tragedies are that all his tragedies are stories of suffering and death. Suffering यानी दुख, पीड़ा. These tragedies are stories of intense human sufferings and death. The protagonist, ये नया वर्ड है. प्रोटेगोनिस्ट का मतलब ये बार बार आएगा. हर ड्रामा का जो हीरो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट. PROTAGONIST. प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है? उसको सफर्स ऑन ऑल प्लेन्स. ट्रेजेडी कैसे इवॉल्व होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कौन कौन से लेवल्स पे प्रोटेगोनिस्ट सफर करता है? फिजिकल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल. In the existing circumstances of the hero, death comes to him more as a relief. और अक्सर सारी ट्रेजेडीज का जो एंड होता है हीरो की डेथ से होता है, और ये डेथ उसको किस रूप में आती है? एज अ रिलीफ. उसको रिलीफ होता है, नॉट एज अ पनिशमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस अ लिटिल अबाउट द ट्रेजिक हीरो. The Shakespearean tragedy is basically the story of the hero. I told you, hero को हम क्या बोलते हैं? Protagonist. The hero of the Shakespearean tragedy is a great man. वो कोई छोटा आदमी नहीं होता, वो एक बड़ा आदमी होता है. जैसे एम्परर, एम्परर बोलते हैं किंग, अ किंग और अ जनरल और द कमांडर, कमांडर इन द आर्मी. ठीक है. ही इज एट द सेम टाइम एसेंशियली अ गुड मैन. जो हीरो है ट्रेजेडी का, एसेंशियली वो बहुत अच्छा आदमी है. लेकिन ट्रेजेडी किस कारण होती है? बट ही हैज अ ट्रेजिक फ्लॉ. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रेजेडी में जो है, हीरो में एक फ्लॉ होता है. FLAW. फ्लॉ का मतलब कोई कमी, कोई दोष, कोई कमजोरी, जिसकी वजह से पूरी ट्रेजेडी होती है. एंड फ्रॉम दिस डिफेक्ट कह सकते हैं आप, द होल ट्रेजेडी राइजेस फ्रॉम दिस माइनर फ्लॉ और डिफेक्ट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो. जैसे आप देखो मैकबेथ में उसका फ्लॉ क्या है? ही इज ओवर एम्बिशियस. ओके. So on the whole, his tragedies are stories of sorrow and sufferings of a very good man placed amidst certain hostile. एक ऐसा अच्छा व्यक्ति जिसको किसके बीच में रखा है? Hostile means adverse, विरोधी circumstances, परिस्थितियों में से उसको गुजरना पड़ता है, जिसपे उसका कोई बस नहीं होता, with which he is incapable in dealing. Besides, his tragedies produce twin feelings of pity and fear. उसके बाद आती है ट्रैजिक मशीनरी. क्या क्या डिवाइसेस ड्रामेटिस्ट यूज करता है जिससे कि उसकी ट्रेजेडी की स्पीड बढ़े और गहराई, इंटेंसिटी बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, every Shakespearean tragedy introduces certain factors that heighten the tragic intensity and quicken its pace. Pace means speed. The first among them is the presence of an operation of a malignant fate. Malignant fate means, fate मतलब अकभाग्य, इसे हम बोलेंगे दुर्भाग्य, उसका misfortune. Every hero seems to be struggling. हर हीरो स्ट्रगल कर रहा है किसके अगेंस्ट? अपने दुर्भाग्य के खिलाफ. His hostile fate. और उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी परिस्थितियां जो उसके विपरीत हैं, इस तरह से ट्रेजेडी इवॉल्व होती है. एंड विच इज बोथ ऑफ दीज आर अल्टीमेटली टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू हैंडल. वो इनको हैंडल नहीं कर पाता.
सेकेंडली, जो सेकेंड डिवाइस यूज करता है ड्रामेटिस्ट, वो है मैलिग्नेंट सुपर नेचुरल पावर्स सच एज घोस्ट्स. कौन कौन आते हैं सुपर नेचुरल पावर्स में? घोस्ट्स आती हैं, विचेस, अपैरिशंस एंड ओमन्स एंड सुपरस्टिशंस विच ऑपरेट इन अ वेरी सटल वे. सटल यानी बहुत बारीकी से, दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म तरीके से ये अपना रोल प्ले करते हैं और हर हीरो को इनका सामना करना पड़ता है इन पुशिंग द हीरो ऑन द पाथ ऑफ इविल एंड ब्लडशेड. फॉर एग्जाम्पल, जो मैकबेथ प्रिस्क्राइब इन सेकेंड ईयर, यू हैव द विचेस प्लेइंग देयर रोल. Then in Hamlet we have the ghost playing its most vital role. They all belong to a world of mystery. Then madness also, another element in Shakespeare's tragedy. Madness also plays its role in most of his tragedies. For example, Hamlet, King Lear. Then in Macbeth you must have studied about character of Lady Macbeth. Okay, Ophelia in Hamlet. They all go mad at one stage or the other. And finally, all the tragedies have multiple murders or deaths take place in Shakespeare's tragedies. So this is all about, in short, about the tragedies and comedies of Shakespeare. I hope you got me well. In next lecture, I'll discuss something more about the salient features of his works. Thank you.